keynote address session. शिखर व्याख्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. I would now request Professor Anil Gupta to kindly do the honors of welcoming our special guest of honor, the Honorable Minister, with a token of gratitude. Ladies and gentlemen, let's put our hands together to welcome the Honorable Minister. We are indeed grateful to you, sir, for sparing your valuable time and being here with us today. Requesting Professor Gupta to also welcome and honor Dr. Shombi Shah, UN Resident Coordinator, India, with the token of gratitude, our keynote speaker today. A warm welcome to you, sir. Ladies and gentlemen, we are honored to have with us today Shri Sudhir Mungbantibar, Honorable Minister of Forests, Cultural Affairs and Fisheries from the state of Maharashtra. And I have the proud privilege in requesting the Honorable Minister for the special address. Let's put our hands together to welcome Honorable Minister for his address. वंदे मातरम. यहाँ उपस्थित डॉक्टर श्री शोम्बी शाह जी, आदरणीय श्री आशीष चतुर्वेदी जी, आदरणीय श्री कीर्तिमान अवस्थी जी, और जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है ऐसे हमारे आदरणीय अनिल गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रिय भाइयों, सम्माननीय नागरिक भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं आदरणीय अनिल जी को कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, जिसमें ईश्वरीय कार्य है ऐसे विषय पे चर्चा के लिए निमंत्रित किया और पर्यावरण की चिंतन मंथन करने वाले आप जैसे महानुभावों के बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ. सही तो ये कहा जाता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल. 456 करोड़ वर्ष के इतिहास में अपने आप को किसी ने तेजी से बदल दिया तो वो मनुष्य है. मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां से मैन इज ए सेल्फिश एनिमल, यहां तक की सफर हमने 21वीं सदी में देखी है. सही तो 17वीं सदी हो, 16वीं सदी हो, 18वीं सदी हो, 1820 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक सब ठीक था. निसर्ग भी अपना काम करता था, ऋतु चक्र अपना काम करते थे. मगर 1820 से एक बात ध्यान में आई कि इसके पहले विज्ञान का, तंत्रज्ञान का अभाव था, मगर पर्यावरण का प्रभाव था और उसमें से खुशी और आनंद का भी प्रभाव था. 21वीं सदी में विज्ञान का प्रभाव है, तंत्रज्ञान का प्रभाव है, मगर उसके साथ आनंद और खुशी का अभाव है और डिप्रेशन के टैबलेट्स का ज्यादा प्रभाव है. मैं पिछले 5 साल धन मंत्री भी था और वन मंत्री भी था, फाइनेंस मिनिस्टर भी था और फॉरेस्ट मिनिस्टर भी था. एक बात का मुझे अभिमान था कि स्वाधीनता के बाद मैं अकेला एक मंत्री था कि जिसने मेरे स्टेट को 11,975 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस करने में यश प्राप्त किया था. इंडिया टुडे ने एक बार नहीं 2 बार मेरा दिल्ली में ही सत्कार किया, पुरस्कृत किया. पर मैं मन में हमेशा मेरे मन में द्वंद्व होता था कि क्या यह मेरा लक्ष्य है जीवन का. क्योंकि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपने आप को बदल रही है, वो कह रही है कि जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, उससे आगे हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में सोचे. कौन सा देश धनवान है उससे ज्यादा, कौन सा देश है जिसमें लोगों के चेहरे पे सबसे महंगा कॉस्मेटिक है. अगर किसी ने पूछा सबसे महंगा कॉस्मेटिक कौन सा है, कोई कहेगा पेरिस, कोई कहेगा लंदन. सबसे महंगा कॉस्मेटिक तो चेहरे की हंसी है, खुशी है.
और ये हंसी खुशी कहां मिल सकती है? तो मैं तो धन मंत्री भी था और वन मंत्री भी था। तो कभी मुझे एक बात अमेरिकन किसी चिंतक की पढ़ने में आई, उसने लिखा कि जब जब आपके मन में यह द्वंद्व आ जाएगा कि धनशास्त्र बड़ा कि पर्यावरण शास्त्र बड़ा, तो नोट गिनते समय आपकी सांस बंद कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि धनशास्त्र बड़ा कि पर्यावरण शास्त्र बड़ा। और आज हम उसी की चिंता में आए हैं कि क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण की रक्षा, वातावरण में बदल हो रहा है, जलवायु में बदल हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? बचपन में शेख चिल्ली की कहानी पढ़ी थी, पर बाद में ये ध्यान में आया कि शेख चिल्ली ये काल्पनिक पात्र नहीं है, वो हम में है कि जिस पे बैठते हैं उसको ही तोड़ने का काम करते हैं। और उसी दृष्टिकोण से भी हमने बदलाव की शुरुआत की। मैं वन मंत्री था, वन मंत्री के नाते मैंने देखा कि ये जो विभाग है, ऐसा माना जाता है कि कोई वन मंत्री बनता है तो वो टॉप 10 में नहीं रहता है, वो लास्ट 10 में रहता है। फॉरेस्ट मिनिस्टर ये राजनीतिक दृष्टिकोण से आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, यानी अपने देश की भाषा में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में बीपीएल वाला मिनिस्टर बोले तो फॉरेस्ट मिनिस्टर। और सुदैव से मैं पहले 5 में भी था और आखिरी 5 में भी था। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो सुवर्ण योग आ नहीं सकता है कि वन और धन, तो वन को कोई भी अवस्था में धन कम नहीं होना चाहिए। और जब किसानों पे आपत्ति आती थी, बरसात के दिन कम हो गए मगर बरसात ज्यादा हो गई, 1956 में बरसात की जो दिनों की संख्या थी वो इतनी कम हो गई, पहले बूंद बूंद पानी आता था, अब पानी इतने तेजी से आने लगा कि किसान अपने फसल को आगे नहीं ले जा सकता है। हर साल अर्थमंत्री के नाते, धन मंत्री के नाते 10,000 करोड़ रुपए मुझे हर साल कम से कम देना होता था। और वन मंत्री के नाते मैं देखता था कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी रहते थे वो वन विभाग को पैसे नहीं देते थे। ये 10,000 करोड़ को अगर बचाना है तो वन विभाग को 1,000 करोड़ हम देंगे, वन बढ़ेगा। वातावरण में अगर वनों के आधार पर पर्यावरण में बदलाव होगा तो ये जो हम 10,000 करोड़ देते हैं वो कम हो जाएंगे। हम खुद का मकान बांध सकते हैं मगर भाड़े में इतना ज्यादा पैसा खर्च करना ये तो कोई बुद्धिमत्ता की लक्षण नहीं हो सकता है। और मानव के नाते हम पे ये जिम्मेदारी भी है कि हम होटल पे जाते हैं, होटल में जाने के बाद ये तो नहीं सोचते कि यहां पे परमानेंट कुछ सुधार करना है, क्योंकि हम आए एक दिन जाना है। हमको भी इस वसुंधरा में जो भगवान जिसका आर्किटेक्ट है, हम आए हैं, हमको कुछ देकर जाना है। हर योनि में इस दृष्टिकोण से ही हर योनि काम करती है। अगर कोई पक्षी कोई फल भी खाएगा तो बीज डाल के ही आगे जाएगा। हमें तो सीडलेस फ्रूट चाहिए, हम सीड से भी नफरत करते हैं, हमें तो हर बात सीडलेस चाहिए। तो ऐसे वातावरण में हमने कुछ निर्णय किए। एक उदाहरण देने के बाद हमने जो हमारी जो प्रैक्टिसेस है, जिसको अच्छी बुरी आप जैसे मूल्यांकन करना है, उसका आकलन करना है करिए, मगर वो मैं कहूंगा मैंने बीच में 2018 को आईआईटी पवई में एक हरिप्रिया एचओडी है, उनको एक काम दिया था। क्योंकि एक बात मेरे ध्यान में आई जो मैं मराठी में कहना चाहूंगा कि मां के सेवाओं का मूल्य, इसका कभी मूल्यांकन नहीं होता। मां की सेवा का कोई मूल्यांकन नहीं करता है। वैसे ही मराठी में ऐसा कहते हैं कि आई की सेवा का मूल्यांकन नहीं होता, वैसे ही वनराई की सेवा का मूल्यांकन नहीं होता। क्योंकि मां का प्यार फ्री में है, पर्यावरण का प्यार फ्री में है, तो इसका मूल्यांकन नहीं होता। मगर इसकी कीमत 1,000 नहीं, 1 करोड़ कोई नहीं हीरो से ज्यादा ये प्यार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम ये समझ नहीं पाते। 10 मिनट के जब होंगे तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं हाँ, जब भी होगा इशारा कर देना। अभी एक बात ध्यान में आई कि आईआईटी पवई को जब मैंने रिसर्च दिया, संजय गांधी नेशनल पार्क का, ये 104 स्क्वायर किलोमीटर का है। लंदन का हाइड पार्क, न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क, इससे भी ये मुंबई के पास का 104 स्क्वायर किलोमीटर का बड़ा सुंदर जंगल है। बायोडाइवर्सिटी है, कई प्राणी है, कई पशु है, कई बटरफ्लाई है।
और मेरे ध्यान में आया कि कितना फर्क होता है अगर मैं 104 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसे ही मानव निर्मित जंगल बनाने जाऊं तो मुझे 11,77,000 करोड़ खर्च होगा। औकात है अपनी, भगवान ने दिया है वो हम टिका नहीं सकते। 30 साल में 11,77,000 करोड़ खर्च होगा। जो कार्बन स्टॉक करता है साल में ये ट्री 505 करोड़। वहां पे तुलसी और विहार ये सरोवर है जो मुंबई में अमीरों को पानी पिलाते हैं। ये सब पानी वाल्केश्वर में जाता है, पेडर रोड पे जाता है। अगर ये पानी मैं बाहर के टैंक से लाता हूं, उसको शुद्ध करना है तो 600 करोड़ साल में ज्यादा के लगेंगे। तो भगवान ने इतनी सेवा दी है और हम ऐसे बर्ताव करते हैं। इसलिए फिर हमने कुछ बातों का निर्णय किया कि इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, वसुधैव कुटुंबकम हम करते हैं। तो पहली बात कि कभी मैंने बचपन में एक शेर पढ़ा था कि दुनिया को बदलने वाले अगर आप ढूंढ रहे हो तो मत ढूंढो, एक बार अपने आप को आईने में देख लो, दुनिया बदलने वाला मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं दुनिया में पर्यावरण को बदलने वालों को ढूंढने के बजाय मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने आप को आईने में देख ले कि मैं कुछ अपना योगदान दे सकता हूं क्या। और उसी आधार पे हमने कई निर्णय किए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण निर्णय क्या किया, जैसे यहां कहा जा रहा था कि कुछ राज्य बहुत आगे है, कुछ राज्य पीछे है। अब ये तो हम धन के आधार पे तय करते, ये गरीब है, ये अमीर है। वो हृदय से कितना अमीर है ये देखते नहीं। हम ऊंचे इमारतों पे अमीरी गरीबी का मूल्यांकन करते हैं। वो कितना खुश है, उसका परिवार कितना खुश है, बेटा अपने बाप का कितना सुनता, पत्नी अपने पति का कितनी सुनती, पति कितने पत्नी का सुनता। क्योंकि पर्यावरण में एक भी बात है, ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये भी रिसर्च किया गया है। तो पहला काम हमने ये किया कि हमें पेड़ लगाना है, मगर डिपार्टमेंट को नहीं लगाना है। हमें पेड़ काटने वाले मानसिकता के लोगों से पेड़ लगाने वाले मानसिकता के लोगों की संख्या बढ़ानी है। ये लोक सहभाग होना चाहिए, लोक आंदोलन होना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि अभी कोई देश की इतनी बड़ी आर्मी नहीं जितनी मेरी है। मेरी ग्रीन आर्मी है 6.1 मिलियन की। देश की आर्मी नहीं है, क्योंकि देश की आर्मी सीमा की सुरक्षा के लिए, मेरी आर्मी, मेरे विभाग की आर्मी, ये भगवान ने दिए हुए वसुंधरा के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है। क्योंकि इसमें लोक सहभाग बढ़ाना होगा। ये कोई सिर्फ कानून से हम इसको रोक नहीं सकते। मां और पिताजी को नमस्ते करना है, वंदन करना है, नमन करना है, कानून नहीं हो सकता। ये तो संस्कार की बात हो सकती है। तो पर्यावरण ये कानून की बात नहीं, ये संस्कार की बात हो सकती है। और हमने इस ट्री प्लांटेशन को 50 करोड़ तक हम लेके गए, जिसमें 4 बार लिम्का रिकॉर्ड बुक ने उसको 4 बार सम्मानित किया। फिर दूसरी बात हमने सोची कि जंगल से जीवन के मंगल तक जाना है, वन से हमें धन तक जाना है। वन है तो जग है, जग है तो इंसान का तग है। और इसी दृष्टिकोण से हमने इस पे आधारित जो परिवार है, जो गांव है, जो जातियां है, उनकी जीवन में हम बदलाव कर सकते हैं क्या। तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवन योजना बनाई, जो हमारी बहुत सक्सेसफुल है। इतनी सक्सेसफुल कि मैं 16 मार्च 1995 से विधायक हूं, 95 से 6 बार चुन के आया। जहां जहां जंगल है वहां के गांव के लोग आते थे, कहते थे कि हमको गांव हमारे बफर जोन में मत डालिए। विरोध करते थे, एजिटेशन करते थे, आंदोलन करते थे। अब उल्टा हो गया। हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवन योजना लाने के बाद लोग आते, भाई साहब हमारा गांव डाल दो ना, उसमें जंगल में डाल दो हमारा गांव, हमारा इस बफर जोन में डाल दो। ऐसे कई रिप्रेजेंटेशन आने लगे जो कहते थे कि जंगल से बाहर निकालो, हमें ये नियमों की पाबंदी नहीं चाहिए, हमें कोई कानून का कवच नहीं चाहिए जिसमें हमारे जीवन के काम में बंधन आएगा। आप बोलते जीवन के काम में बंधन आने दो, मगर बफर जोन में डालो। क्योंकि हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये शुरू किया। एक हमारे सामने प्रश्न था कि वन्य प्राणी बढ़ गए। ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि आपको शायद पता नहीं होगा कि विश्व में 193 देशों में 14 देशों में बाघ है, 14 ही देशों में, उसमें 65% से ज्यादा हिंदुस्तान में है।
मगर आपको पता नहीं होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, 203 टाइगर विश्व के। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं। अभी हमारे भाई साहब आए, उन्होंने ताड़ोबा जाकर रहा है, विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब मेरे सामने प्रश्न है कि ये टाइगर इतने तेजी से अब बढ़ रहे हैं कि अब ये चिंता का विषय हो गया। पहले टाइगर को 4 होते थे, उसमें से 2 समाप्त होते थे, अब 6 हो रहे, 6 भी बढ़ रहे। अब करना क्या? हमने फिर किया कॉम्पेंसेशन बढ़ाओ। हमने अभी उसमें कॉम्पेंसेशन बढ़ाया थे। गांव के लोगों को जंगल में जाने से रोकने के लिए उनको वहां रोजगार दे रहे हैं, और जो जंगली प्राणियों से नुकसान होता है उसमें भी नुकसान भरपाई बढ़ा दी। आपको कॉम्पेंसेशन तो मैं कानून कर रहा हूं मार्च में, और मेरा कहना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग 7 पे कमीशन के समय 24 घंटे में फाइल निकलती। मैं कॉम्पेंसेशन देना है गरीबों को तो 24 महीने फाइल नहीं निकलती। तब पूरे देश की चिंता हो जाती है, तब अर्थव्यवस्था की चिंता होती है, तब हमें तिजोरी की चिंता हो जाती है। 7 पे के समय किसी को चिंता नहीं रहती, मैंने देखा है। तो हमने कहा नहीं भाई, किसानों का भी तो हक है ना, इतनी मदद करो, और वो भी कानून में, कि किसान के सामने और जंगली जानवर उसके खेत की ओर आ रहा है ना, तो उसने दूर से कहना चाहिए, तेरे में जितनी ताकत है मेरा नुकसान कर दे, सरकार मुझे डबल नुकसान भरपाई देगी। ऐसा हम कानून बनाने जा रहे हैं, और ये कानून के आधार पर ही हम आगे जाने चाहते हैं। आखिरी का मुद्दा, 10 मिनट हो गए। एक जल साक्षरता का भी हमने कई केंद्र में, कि जल ये भी हमारे लिए, हमने तो नदी को माता माना है, मगर उसके साथ जितना व्यभिचार हमने किया है उतना दुनिया में किसी ने नहीं किया, जो नदी को माता नहीं मानते। नदियों के किनारों पे हमारा पोषण हुआ, हमने उसका शोषण किया। नदी का जल हमको, हमारे तन को स्वच्छ बनाता है, उसी जल को अस्वच्छ बनाना, यही हमारा पराक्रम। कई निर्णय हमने किए हैं, समय के अभाव पे मैं कह नहीं सकूंगा, मगर मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझे सुना। इतना ही मैं भगवान से कहूंगा, सबसे दुनिया का महंगा कॉस्मेटिक, पर्यावरण पे प्रेम करने वाले ये मेरे भाई बहनों के चेहरे पे 365 दिन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय जी के प्रेरणात्मक संदेश के लिए और प्रोत्साहन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला और हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं। Ladies and gentlemen, the Honourable Minister in his address stressed on the importance of forests and rivers in the climate change, resilience and sustainability. We once again thank the Honourable Minister for sparing his valuable time and gracing this occasion. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we have with us our eminent keynote speaker, Dr. Shombi Shah, who is an American diplomat with the United Nations UN Resident Coordinator in India. On November 15, 2021, Dr. Sharp was appointed by the UN Secretary-General as the UN Resident Coordinator in India. As UNRC, Dr. Sharp is the direct representative of the UN Secretary-General and highest-ranking UN official based in the country. Carrying a diplomatic rank equivalent to an ambassador of a foreign state, he also serves as designated official for security of the UN system in country. And I have the proud privilege in inviting Dr. Sharp for the keynote address. Please put your hands together, ladies and gentlemen, once again to welcome. Thank you so much, dear colleagues. Sri Sudhir Mungantevar, the Honourable Minister of Forests and Cultural Affairs and Fisheries, Government of Maharashtra, my dear colleague Ashish from UN Development Program, Sri Avasti from GIZ, and to all of you here in the room, all of the dignitaries who already spoke in the morning sessions, who have come together to make this day possible. I offer a warm-hearted namaste. Mujhe har bar Vigan Bhavan mein aakar bahut khushi hui. It's a true pleasure on behalf of the United Nations family and system in India, as well as representative of the UN Secretary General, to join you for this very, very important conversation, this 3-day conversation on resilience and sustainability
summit, bringing together so many leading experts and different important points of view in the field of disaster risk reduction and climate resilience from India and from around the world. Very delighted to see so many different representatives across the important range of stakeholders, including, of course, governments, academia, United Nations, international community colleagues, governments at all levels, the center, the state governments, local governments, civil society, business. We can't overstate the importance of the private sector, of business in this conversation, in particular the dynamic Indian private sector as well. And to thank the organizers also, and of course the Ministry of Home Affairs, NIDM, NDMA, DST, GIZ, UNDP, and other UN agencies, lots of different acronyms. So if I may say, and also just to mention that I am aware that the state of Maharashtra is also quite a leader in terms of climate action. So I think what we understand here, as has been reinforced this morning, is the intersectionality of the risks that we're facing and the timeliness of India's leadership in this space, both domestically and on the international stage. And clearly the G20 presidency is an incredible opportunity to help drive that forward. I would take a moment to commend India on establishing the very first working group on disaster risk reduction within the G20 platform. And also to note that India has placed 2030 Agenda and the SDGs at the very core of India's G20 presidency. In fact, one could almost say it is an SDG 20, and we're very, very much enheartened by that critical leadership. So, colleagues, we're living, it's no secret, in a world where risk creation seems to be moving faster than risk reduction. And that's why we are, as was mentioned by Srivatsa earlier, we're not able only to speak about sustainability. If we had tackled the challenges of sustainability, resilience wouldn't be so much more prominent in the conversations that we're having here today. So this is really important as we move forward towards the 2030 Agenda and SDGs, and as we look even further forward to India's Vision 2047, from Azadi Ka Amrit Mahotsav to Amrit Kal, that we understand the importance of the balance here of sustainability and resilience. We're still, as a global community, feeling the aftershocks of one of the greatest crises we've had in our lifetime, certainly in memory, the pandemic. And even before we could recover from that, we're now, many communities across the world, we're all facing the multiple impacts of this senseless war in Ukraine, of a cost of living crisis, of the basic necessities of life, food and energy, fertilizer, attacking in particular the ability of the poorest countries and the poorest communities within countries to cope. And yet, the backdrop of all of this is the greatest existential threat of all, the triple planetary crisis. And as we've heard, extreme weather events are happening more and more often with greater intensity. In fact, climate change has increased the number of natural disasters fivefold, 500% in the last 50 years. And I think when one first looks at this number, 50 years, it seems, oh, that's quite a long time. And for many of you in the audience, that is a long time. But for many of us in the audience, this is within our lifetimes. It's not that long. And what's even more concerning is the trend, the pace is increasing. It's staggering. According to UNDRR, disasters over just the last 20 years have impacted more than 4 billion people, have resulted in the loss of life of over 1.2 million, and caused trillions and trillions of dollars in economic damages. And if we look again at the trend, if we look at the warming, pretty much if you want to look at the 7 hottest years on record, you look at the past 7 years.
the 10 hottest years on record. You look at the past 10 years, the 20 hottest years. You look at the past 20 years. And what this means, even more frightening, is that even today, the hottest years today will soon be the coolest years. Here in India, as we know, we face a number of natural disaster and extreme weather risks. In fact, according to the Center for Science and Environment, every day of 2022, some community of India was facing this risk, causing loss of life, causing loss of livelihoods. And the direct overlap is unmistakable between the incidence of this risk and poverty density profiles in terms of distribution of populations. So we see why it is so important that India is taking such a leadership position on building resilience and on learning lessons, and why this summit and this interaction is so critically important. Giving communities the tools to learn from and to adapt and to build resilience against these multiple overlapping risks is so important, and this is at the top of our priorities within the United Nations system, both globally and here at the country level, and so important to see India's leadership. This summit, one very important example of that. Now, I would note in particular, the UN Secretary General launched a global initiative last year calling on working together to ensure that every single person on the planet is covered by an early warning system and response within the next 5 years. Here we see that India's early warning systems, in particular, for example, like I mentioned, for cyclones, now has full coverage of the entire coastline, and that's quite a considerable coastline, and has helped to reduce mortality by over 90% in the last 15 years. This is really, really, truly important. And I think that these initiatives fit and align with a broader policy priority that India has pushed forward on the international stage. For example, supporting the country on the front line to share its lessons, to share its capacities through South-South cooperation with other countries in similar situations. And this must be integrated at all levels. It's how we build, it's how we plan, it's how we invest, it's how we live. Here I would mention the Prime Minister's recent initiative that the Secretary General of the UN was pleased to join with him in launching in Gujarat, the Lifestyles for Environment global initiative, a global Jan Andolan about responsible consumption and livelihoods. So the pandemic, learning from crisis, turning crisis into opportunity, has taught us how to forge new partnerships, how to work together in new ways, and how to accelerate processes that were already underway. For example, digital innovations. The response to COVID, India's COVID platform, was a beautiful example of bringing together some, good old-fashioned community-level, door-to-door action through Anganwadis, through ASHA work, through local-level presence, together with the most advanced technologies in digital platforms, the COVID platform, the most advanced pharmaceutical technologies and capacities in the Indian pharmaceutical. The United Nations, UNDP, and World Health Organization, UNICEF, were all very proud to be able to partner within this. And that all comes within India's world-class leading digital public infrastructure. Again, another important priority within the G20 as well. And I think, we must understand that the most cost-effective risk reduction model is early warning, it's prevention, preparedness, early warning, with just 24 hours of warning ahead, for example, ahead of a storm. Damage can be reduced by over 30% at least. And yet, again, as I mentioned, over a third of the world's population, especially least developed countries, small island nations, don't have access to this protection. So this is the ultimate goal. And improving global data capabilities also within the digital revolution helps us to predict and respond
to this complex set of risks that we're facing. The UN's recently launched Complex Risk Analytics Fund is a multilateral effort to help support global data ecosystems on DRR. And India is again a leader in data for development. We look forward to the G20 moving this needle forward also. And finally, we must ensure that we always keep in mind leaving no one behind, that we leave no one behind, that we enhance international cooperation for recovery, adaptation for those least developed countries, for those small island developing states and other communities within countries, including India, that are least able to cope and are least, in a way, guilty for creating the problems that we face now, the development that was made on the basis of carbon-based economies. A final point, the historic COP27 Loss and Damages Fund, the creation of which was something that the Global South, India as a leading voice for the Global South, had been seeking for 30 years. This is a truly important milestone of the COP27 last year in Egypt. It still has to be created, it still has to be funded and spent and implemented, so lots of questions remain, but we truly must understand that India's voice, recognizing we need a balance between climate mitigation and climate adaptation. We need sustainability, we need a just green transition, but it cannot come at the expense of the right to development that communities and nations of the Global South very much have. So let me conclude thanking you again all for this opportunity to join you. Let me recommit the United Nations system here in India to working with you as core partners. I'm very pleased to say that we will very shortly in the coming weeks be launching a new UN Sustainable Development Cooperation Framework, which is our partnership offer to you with the governments of India and with civil society and business from 2023 through 2027, the next 5 years, and we are very much looking forward. This is an exciting time to be here in India, working on resilience, working on sustainability, both within this country and supporting India's leadership position at the global stage. Thank you so very much. Bahut bahut dhanyavad. Thank you very much indeed, sir, for that motivating and brilliant keynote address we had from you. Ladies and gentlemen, let's once again put our hands together for Dr. Shah. I would now request Shri Kirtiman Awasthi, Senior Policy Advisor, CFRI GIZ India, to kindly say a few words. Over to you, sir. Thank you so much. I think we are already running late, so it will be very brief. Honorable Minister of Forest, Cultural Affairs, Fisheries, Government of Maharashtra, Dr. Shombi Shah, the UN Resident Coordinator in India, Dr. Akhilesh Gupta, Secretary, SERB, Mr. Ashish Tiwari, Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Dr. Atri from Himachal Pradesh, and I also can see Professor S.P. Singh also sitting in this hall, and my colleague Ashish Chaturvedi. Good morning, everyone. As GIZ, we are happy to be part of this Resilience and Sustainability Summit 2047 as a program partner. And in fact, this partnership with NIDM is not just for this event. We have, this is also a milestone on a collaborative effort that we have initiated with NIDM on climate adaptation and disaster risk reduction, and looking at different initiatives around that. Such a platform, as we know, provides us the opportunity for cross-learning, and within GIZ we have a program, Climate Adaptation and Financing in Rural India. We are working with Ministry of Environment, Forest and Climate Change and two partner states in Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. We have
again Mr. Ashish Tiwari from Uttar Pradesh and Dr. Suresh Attri from Himachal Pradesh, who will be sharing learnings from the different initiatives around resilience and sustainability in their respective state. And not just the two states, but I think provides opportunity for cross-learning across different level of governance, and we have international partners, national level, state level, and local level. When we talk about moving on the road to resilience, we look at different entry points. One could be the sectoral approaches, either through forestry related interventions in the water sector or the health sector or rural infrastructure. The other possibility is through initiatives around the local planning. And for us, and I think many of us are working on that one, to use or to work along this whole institutional mechanism of the Panchayati Raj institutions. How can we work with the Gram Panchayats to promote resilience and sustainability at local level and engage with communities and through community-based initiatives, and also strengthen the preparedness of the communities to promote resilience and sustainability. For that, we have been working with the state government of UP to develop a framework, what we call a Road to Resilience 2030. We'll be hearing more in the subsequent sessions. We have the sessions around that one, and also sessions around the sectoral approaches, and go beyond sectoral approaches to also promote cross-sectoral approaches, and how can we use this entry point of working with the Gram Panchayats to promote such initiatives around resilience and sustainability. Thank you so much. We look forward to engaging with all of you in subsequent sessions. Thank you. Thank you very much indeed, sir. And now, ladies and gentlemen, to close the proceedings of this session and for words of thanks, may I invite Dr. Sushila Negi, Scientist E, DST, Government of India. Feeling gratitude and not expressing is like wrapping a present and not giving it. So a very warm and graceful morning to all the distinguished dignitaries on the dais, dear friends, and all the august gathering joined here on this occasion. It is my privilege to present the vote of thanks and acknowledge the contribution of the team who really work hard to put this event successful and memorable. I, on the behalf of Department of Science and Technology, Government of India, and the whole organizing committee, would like to extend our sincere thanks to our Honorable Chief Guest, Honorable Minister of Forest, Cultural Affairs and Fisheries, Government of Maharashtra. Thank you very much, sir, for sparing your valuable time. और आज आपको सुनने का मौका मिला और सुनकर ऐसा लगा कि सचमुच ही वन ही हमारा सबसे बड़ा धन है, और जब हम क्लाइमेट चेंज के मद्देनजर से देखते हैं तो कार्बन वन ही सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, और आज हमें उसी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सर, मेरे पास बहुत अच्छे अल्फाज नहीं है कि किस तरह मैं आपका शुक्रगुजार करूं, और यही है कि योर थॉट्स विल श्योरली इनकरेज अस इन ऑल आवर एंडेवर्स minds and would have a impact on our minds in our future endeavors. I would also like to thank my sincere thanks to Dr. Sharp, UN Resident Coordinator India. Your deep and intellectual way of imparting knowledge has added to the glory of this summit. Thank you very much, sir, for gracing the occasion, and we have no words to offer gratitude for your valuable presence here. Our sincere thanks to Dr. Ashish and Dr. Kirtiman to share the thoughts of wisdom and be a partner of the organizing team. The report says that over 101.8 million people were affected by natural disaster in the year 2021. We really look forward for in-depth discussion, knowledge sharing, and recommendation for the Vision 2047 in disaster risk management. Thank you all. Thank you once again for the August gathering. Last but not the least, I would like to thank
all the participants from the representative of the state government, academicians, experts, and the people who have joined across the world. Thank you very much once again. Thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, may I request our eminent panelists for a group photograph? Honorable Minister, sir. May I request Professor Gupta to join the panel and Dr. Akhilesh Gupta, sir, to kindly join the panel for a group photograph. And ladies and gentlemen, once again, let's put our hands together to thank the Honorable Minister, Dr. Sharp, for gracing this occasion, sparing their valuable time and being here with us. And with that, ladies and gentlemen, we will now break for tea. The tea break will be of 25 minutes only. The tea is served in the foyer area, which is on the first floor. Incidentally, also our location for the exhibition and the colloquy, you all which is going to commence from 12 o'clock. The first session is by SEEDS and UNDP. I would request all of you to kindly spare some time and attend the sessions. Also, a special announcement for all our delegates. You have been given the registration forms. We would request you all to kindly fill in the forms, hand over at the registration counter, and collect your delegate kit from there. And please join us for tea at the foyer area. And the next session will commence at 12:25. I request you all to be seated by then. Thank you.